Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. So last week Savan has started and many people follow me now not they follow and महादेव आप सबको खुश रखे आप सबकी सारी इच्छा पूरी करे. चलो last class we have started with histopath of mucosal pemphigoid. So we have started that. We'll be continuing this today also. Okay, let's start. हिस्टोपैथोलॉजी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. वी वर स्टार्टिंग विथ दिस वन. On an ultrastructural level, separation of the epithelium occurs within the lamina lucida, but at a deeper level than in cutaneous pemphigoid. तो हमने पढ़ा था कि cutaneous pemphigoid होते हैं, उनका जो होता है वो थोड़ा superficial level पे होता है, और जो mucosal pemphigoid होते हैं उनका deeper level separation होता है. That we have studied in cutaneous pemphigoid also. ये दोनों एक difference है, suprabasilar split और infrabasilar स्प्लिट. ओके, सॉरी, डीपर लेवल पे होता है. सुप्रावेसिलर स्प्लिट इज इन पेम्फिगस वल्गैरिस एंड पेम्फिगॉइड में इंफ्रावेसिलर स्प्लिट. लेकिन क्यूटेनियस में थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे होता है और म्यूकस पेम्फिगॉइड में म्यूकोसल पेम्फिगॉइड में थोड़ा डीपर लेवल पे होता है. ओके. Now, direct immunofluorescence will show a homogeneous linear pattern of IgG at the basement membrane zone in 80 to 95% of cases. तो 80 to 95% of cases में हम लोग को linear pattern of IgG दिखेगा. Now, targeted antigens include 180 kD that is BPAG2, 230 kD that is BPAG1 and laminin 5 and 6. Okay, that's about histopathology part. Now coming to treatment. Mild cases may require no specific treatment. It can be managed with topical corticosteroids or topical tacrolimus. Okay, तो जो माइल्ड केसेस है उनका एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता. इट कैन बी मैनेज विद सिस्टमिक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और टॉपिकल tacrolimus. Okay, one tacrolimus example is protopic. और अगर हम लोग protopic यूज़ करते हैं, protopic is used, it is used as an ointment, 0.1% ointment. Okay, the drug of choice for oral lesions are 0.05% fluconazide gel. Okay, the patient is instructed to dry the affected mucosa, apply the gel and massage it into the tissues 3 times daily. तो पहले उसको अच्छे से क्लीन और ड्राई कर लेंगे, उसके बाद मसाज करेंगे जेल अप्लाई करके, एंड दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड 3 times daily. The patient should be cautioned not to eat and drink for an hour afterward and advise that application before sleep is advantageous. तो जब वो अप्लाई करे उसके 1 घंटे बाद कुछ खाना पीना नहीं है, और अगर सोते समय करे तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस होता है. The most predictable therapy for oral lesion coupled with other mucous membrane lesion or the rare skin lesion is systemic corticosteroid. तो ultimately the choice of treatment is systemic corticosteroid अगर mild cases नहीं है तो, in which the regimen 1 or 2 is followed. Assessment for osteoporosis and cataract is important as mucosal pemphigoid के जो patient होते हैं वो generally 60 years के होते हैं या उससे ज़्यादा, 60+ years. Excision of affected areas and replacement with a split thickness graft is effective. इसके साथ साथ हम इसको कपल कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, split thickness graft. Now, the conjunctivitis component requires treatment. Complication and debility associated with mucosal pemphigoid center on the symplicity and trichiasis complication. Corticosporin, ophthalmic drops, dapsone, methotrexate or cyclophosphamide are the main agents for ophthalmic cases. Now coming to the prognosis, it can be controlled with systemic corticosteroid. Remission can be maintained in either a drug-free state or as an other day maintenance dose. Poorly controlled disease will lead to continued inflammation and scarring. In oral cavity, these conditions are seen most often as periodontal loss of tooth support or scar obliteration of the edentulous vestibule. In eye, poorly controlled disease will lead to vision loss from corneal
opacification. That's all about mucosal and cutaneous pemphigoid. Okay, bye. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.